morning. So today's update, we just saw him. Mr. Saif Ali Khan is doing excellent, and we made him walk. He can walk well. There's no problem. There's no much pain or any other symptoms. So looking at his parameters, his wounds, and all the other injuries, he is safe to be shifted out of the ICU to a special room. Only thing what we have advised and the rules for him that he has to take rest for some time because of the wounds on the back especially, which can have chances of infection, and his movements are restricted for a week almost, for the most important reason that he had a injury in the spine, and which has been repaired. The fluid which was coming out has been repaired, which has a potential chance for infection. That's why his movements and also the restriction of the movements, as well as movements of the visitors movements are being strictly restricted for his faster recovery, and he's doing excellent, and he's recovering very fast, and God is kind. सर मराठीत एक सांगा सफेद सैनिकांची मी डॉक्टर नितीन डांगे, चीफ न्यूरोसर्जन. मी आणि लीना जैन, प्लास्टिक सर्जन, आणि कार्डिओलॉजिस्ट आणि अॅनास्थेटिस्ट निशा गांधी मॅडम आणि त्यांची टीम मिळून, आणि माझे दोन कलिग डॉक्टर कुशल आणि डॉक्टर मयूर, सर्वांनी मिळून आम्ही त्यांचं काल सकाळी सकाळी पहाटे ऑपरेशन केलेलं होतं. त्यांना ऑपरेशन नंतर ICUमध्ये शिफ्ट केलेलं. आज सकाळी अपडेट देण्यासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत. तर त्यांची तब्येत एकदम छान आहे. त्यांना आज मी चालवलं, तर काही प्रॉब्लेम नाही चालण्यासाठी. फक्त पाठीमध्ये खोल जखम असल्यामुळे इन्फेक्शनचे चान्स असून पाणी तिथून पाठीतलं जे पाणी येत होतं ते रिपेअर केल्यामुळे त्यांना बेड रेस्ट सांगितलेली आहे. म्हणून आम्ही त्यांना ICU मधून आज स्पेशल रूममध्ये शिफ्ट करत आहोत. ते आउट ऑफ डेंजर आहेत पण आणि स्टेबल पण आहे. अँड ही इज व्हेरी हॅपी अँड ही इज very good, and recovery is very satisfactory. डॉक्टर निशा गांधी वापरण्यात आला होता तो एक्सपोर्टेड होता की नक्की दुसरा कुठला शस्त्र होता? ते आम्ही तपासासाठी पाठवलेलं आहे, पण शार्प नाईफ. पॅरालाइज वगैरे काय होण्याचे काही काय आता तरी काही चान्सेस नाही. टचवूड, देवाची कृपा आहे की त्यांना काही आता रिस्क नाही, पॅरालिसिसचा काही प्रॉब्लेम नाही. त्यामुळेच मी बोललो की ते चालले, त्यांना काही पॅरालिसिसचा किंवा काही त्रास नाही आहे, आणि ते अगदी नॉर्मल आहेत, बोलतायत, खुश आहेत. फक्त जसं मी बोललो, पाठीच्या खोल जखमेमुळे आणि पाणी आल्यामुळे त्यांना बेड रेस्टची ॲडवाइस केली. एकदम छान आहे. तेच मी सांगतो, नर्व्स वरती इंजुरी नव्हती, नर्व्सच्या कव्हरिंग वरती. बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया. जहाँ तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज ही इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट. इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है. और मैंने जैसा आपको बताया, बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं. वो खुद इतना इंजरीज के साथ, छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉक इन आए हैं. वो ऑटो में आए थे क्या? मतलब हमने तो अंदर उनको वॉक इन आते देखा. ही डिड नॉट इवन टेक द स्ट्रेचर. He has come walked in the hospital. सर रिकॉर्ड कब करेंगे स्टेटमेंट? पुलिस का रिकॉर्ड कब करने वाले स्टेटमेंट? Police will let you know. Police will let you know. See, we are here to update you regarding his medical condition. Rest of the things rest of the things, the agencies, whatever as per protocol, they are doing their job. We are here just to update you regarding he is doing excellent. We are shifting him out from the ICU to the special room, and that's a good news for all of us. As you know, Mr. Saif Ali Khan is recovering. He is doing excellent. Prashant Mehta. Yeah.
No doctor, just trustee. He is the permanent trustee of Leelavati. So as you know, Hospital. he's doing very well. The doctors have done a fabulous job. They're working round the clock, and they have also immediately got him out of the danger, and he's recovering well. And we would just request you just to give him that privacy, because he needs to rest and he needs to recover from the wounds, and he will be shortly out. Very soon. So we are observing his progress. He is doing excellent and very well as per what our expectations are. So as per his progress, maybe we have advised him, as I just mentioned, bed rest. So if he is comfortable in at least 2 to 3 days, we will be good to discharge. If he progresses That will well. depend on his progress. सर क्या आप लोगों के अलावा फैमिली के अलावा कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर समय मांग पाए हैं मिलने का कुछ ऐसे आपसे रिक्वेस्ट किया गया है? As of now, they are investigating with the family. That's what we have been told. But what we are here to update you regarding We will not be able to comment that, on let- their that, aspects. Legal authorities and police authorities opine about that. उस बारे में हमारे से Sir, how long will it take to recover completely? Maybe a week's time. सर हिंदी में थोड़ा बता दीजिए किस तरह से जो स्पाइनल तक गया था वो जो 2.5 इंच का था कि क्या हुआ पूरा एग्जैक्ट। So basically कल हमने रिलीज में बताया था कि उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, एक गर्दन पे, और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। अब भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, टच करने स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज डूइंग एक्सलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज, एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए, इसलिए हमने डिसीजन लिया अभी थोड़ी देर में हम उनको स्पेशल रूम में शिफ्ट करें। डॉक्टर सर डाइट वगैरह स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के अलावा जो 5 और इंजरीज हैं नेक के पास में और सिर पे, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकें। He took the health premium from Niva Bhupa, and the hospital has asked him to pre-authorize the payment of 35 lakhs. Is it true, sir? And then we are not in a position to tell you the bills right now. Bills would be right now, there is just an estimate probably which has been asked by the doctors depending on the highest value. Let's say 3-4 सर्जरी होती है या क्या होती है, तो ये सब टेंटेटिव वैल्यूज रहते हैं, just to give an indication. Executive class surgeries and all, the actual bills will be shared with you. That's not a issue, and it's all transparency. Our hospital has everything fixed. You can see our tariff. Everything is there on the paper. It's there on tariff card. It is billed as per that. It is nothing के VIP है तो हम कुछ उसको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ये हॉस्पिटल में अगर आप भी उस पर्टिकुलर कमरे में रहेंगे तो जो चार्ज आपको हो सकता है वही चार्ज सैफ अली साहब को भी होगा। जो कैटेगरी ऑफ रूम आप चूज करते हैं उस पे आपका चार्जिंग डिसाइड होता है। शरीरात किती टाके लावण्यात आले आहेत, टाके किती लागले त्यांच्या शरीराला सर, त्यांच्या शरीरात टाके किती लागले आहेत त्या संदर्भात थोडी माहिती द्या। No, he is quite, so of course after the trauma when he came here, he was quite shocked. Anybody would be, with so many injuries, blood flowing on all around. And now after the surgery, and he's doing well. When he walked, he's quite happy, and the positivity which he Very has, charming the and way he good came, as a tiger or a lion, whatever we say, very strong, and he's proving to be strong now, and that positivity really works for him, and we hope and pray to God that he recovers soon. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।